Hello everyone, welcome to my channel Insightful Maths. In today's session, we are going to discuss this chapter comparing quantities. This is of class 7. This is an introduction video wherein we'll be covering most of the topics which are there in this chapter. And in the upcoming videos, we'll be discussing the exercise questions along with the deleted topics which are rationalized this year but which are important from understanding point of view or from your Olympiad point of view. Okay, so please ensure to watch the videos till end, and whichever questions are being asked, you need to answer the questions in the comment option. So let's begin the session. All right, so starting with the topic, the first topic that we need to cover is what is a ratio. Let us understand the ratio whenever these are the ways of comparing any two numbers. If I have, for example, let's understand it like this. If I have a number 2 and a number 3 and I need to compare this number, how do we do the general comparison? We use the symbols like greater than, less than, equal to. These are the general ways of comparison. Okay, so I'll write 3 is more than 2, I'll put the symbol. If we have to now measure the performance, for example, there is a child who got 4 out of 6 and another child is there who has also got 4 out of 10. अब देखने में हमें क्या लग रहा है, दोनों बच्चों के 4 मार्क्स आए हैं, राइट? बट आउट ऑफ टोटल इज डिफरेंट एंड आई नीड टू नो हु हैज परफॉर्म बेटर इन द टेस्ट, right? So there has to be a way of the comparison. Another thing is, if I have a bag which is having, let's say, three kind of balls, it is having red, green and blue, three kind of ball, and the different numbers are given to me. I need to compare what is the ratio of red to the green ball, right? Ratio and percentage, basically these are the two words or the two methods which are used for the comparison. See, now ratio, let's begin with. Let us take a scenario that in a class there are total 30 students. In a class there are total 30 students. Out of these 30 students, let's say the number of boys is 12. Okay, out of 30 students, boys are 12. So what is the number of girls? Number of girls is the difference of this 30 and 12. Okay, so the number of girls is 18. You can add it up together to recheck your answer. 18 plus 12 is again giving you 30. अब मुझे ना कंपेयर करना है कि what is, how do I tell? I mean, if the question says, if I have to maintain the ratio, maintain a balance between the number of boys and number of girls, some new admissions are there and I need to put them in the section and the balance has to be maintained. मुझे यही balance रखना है. For 12 boys, 18 girls to be there in the class. Okay, so how to maintain that balance? So ratio is basically, if I say the ratio of boys is to girls, this colon symbol, these two vertical dots, colon symbol, this is the symbol of ratio, which looks like a fraction but it is not a fraction. We'll talk about it in a while. So ratio of boys to girls, first of all, boys is written, number of boys is 12. I'll write it on the top. Now the number of girls in the denominator, that is 18. Ensure whenever we are writing the ratio, answer has to be given in the simplest form. We know how to convert a fraction to the simplest form. 12 and 18, they both are the multiples of 6. So if I divide them by 6, this is 2 and this is 3. So my answer is boys ratio girls is 2 ratio 3. That means for 2 boys in the class, 3 more girls to be added. 2 boys, 3 girls, 2 boys, 3 girls. The ratio has to be like this. So if, let's say, few new admissions are there and I need to put them in one section. So for every 2 boys that are put in one section, I need to put in 3 more girls in the section for this ratio to be maintained. Right? Now, why it is not a fraction? जब भी हम रेशो का आंसर देते हैं, it has to be given in this dot format. अब ये fraction क्यों नहीं है? We know that fraction is a part of a whole. If I say this is a fraction, so it doesn't make any sense. Why? Boys ratio girls is 2/3. It's not a fraction. इसका मतलब है out of total 3 girls, 2 are boys. Is it making any sense? It's an absurd, है ना? It's not making any sense. So it is just a ratio. It is a way of comparison. ठीक? It is not a fraction, although it looks like a fraction because it has one number up and one number down, numerator and denominator, but it is not a fraction. Why? Because this denominator is not representing the whole part. Correct? Another important thing that you need to keep in mind before finding the ratios of the number is, they both should be of the same kind.
Kind means if I'm finding the ratio of, let's say, height of one person and weight of another person. Height and weight are two different quantities. These are two different things. अगर मुझे रेशो निकालना है तो मैं हाइट का रेशो हाइट से निकालूंगी, वेट का रेशो वेट से निकालूंगी. दे बोथ द नंबर्स शुड बी ऑफ द सेम कैटेगरी, राइट. Another thing is, if we are being given the numbers, they should have the same unit. The unit of the numbers is same. Let me take an example. If I say find the ratio of 5 kilometer to 500 meter, that's my question. Find the ratio. This is a symbol here. You need to find the ratio of 5 kilometer to 500 meter. सबसे पहले हमें देखना है both the numbers should have the same unit. This is in kilometers and this is in meter. Till the time both are not having the same unit, we cannot find the ratio. So 1 kilometer is equal to 1000 meter. We know that. So this number has to be converted to meter. 5 kilometer is 5000 meter. Another number is already in meter. Now having the same unit, now we can find the ratio. So this is 5000 up, 500 down. You may cancel the zeros and 50 upon 5 is 10 upon 1. आप इसका आंसर 10 upon 1 10 नहीं लिखेंगे. रेशो का आंसर कैन नॉट बी अ डेसिमल नंबर. इट हैज़ टू बी रिटन इन दिस फॉर्मेट, अ कोलन in between. So upper number is 10, lower number is 1. So answer is 10:1. देखने में हमें क्या लगता है, if the conversion is not done, तो answer at this level would have been without conversion 1:100, which is incorrect, right? So before finding the ratio of two numbers, please ensure that both the numbers should be of the same kind and should be of the same unit. Alright, now continuing this topic, another thing is proportion. अभी जब हमने इन दो चीज का रेशो निकाला था, they both were numbers. So whenever we are comparing any two numbers, that is compared using the ratio. But when two ratios are being compared, they are compared using proportion. Now what does it mean? What is a proportion? Let me make you understand. If I have four numbers, okay, what is the meaning of proportion? I said whenever two numbers are being compared, अगर मुझे 2 और 3, so we say 2:3. I am comparing two numbers. अब अगर मेरे पास दो रेशो हैं, for example, one ratio is 2:3, that is 2/3. Another one I am having is 12/18. मुझे पता करना है क्या ये 4 numbers proportion में है. इसका मतलब क्या होता है? पहली चीज, ये भी रेशो है, ये भी रेशो है. I am comparing two ratios, so I have to use the concept of proportion, right? प्रोपोर्शन में दो रेशो आती है, तो यहाँ पर दो बार रेशो का सिंबल हैज टू बी रिपीटेड, राइट? these four dots or two colons together, that is the symbol of proportion. अब ये दो रेशोज प्रोपोर्शन में कब होता है? when they are equal in value or they are equivalent ratios. जैसे हमने equivalent fraction पढ़ा हुआ है ना, if the simplest form of any two fractions is same, or I can say that the two fractions are equal, they are equivalent fractions. In the similar manner, आप देखो 2/3 cannot be simplified, it is already in the simplest form. 12/18 can be simplified further, 6 into 2 and 6 into 3. Simplest form is 2/3 only. Are they both equal? Right? If ratio 1 is equal to ratio 2, अगर दोनों रेशो इक्वल हैं, देन दे आर इन प्रोपोर्शन. हम लिखते कैसे हैं? अब हमने नंबर कौन कौन से लिए थे? रेशो 1 में वी हैव यूज 2 and 3, रेशो 2 में वी हैव यूज 12 and 18. हमने देखा ये दोनों रेशो इक्वल हैं, दैट मीन्स दीज टू आर इन प्रोपोर्शन. इक्वल एंड प्रोपोर्शन आर सेम, सो वी हैव टू पुट अ प्रोपोर्शन सिंबल इन बिटवीन. दे आर इन प्रोपोर्शन. पहला रेशो है अ डॉट, द कोलन 1 in between. Second is also a ratio, another colon in between. So first ratio is in proportion with second ratio. Proportion का मतलब if any two ratios are equal, they are in proportion. और हम लिखते कैसे हैं? 1 2 3 4. These four numbers are in proportion. Let us do a question based on this. If I say 4, 8, 16 and x, मेरे पास चार नंबर है. The value of the fourth number is not given. Question says these four numbers are in proportion. Find the value of x. हमें proportion का मतलब पता है. If the ratio of these two numbers
and the ratio of next two numbers that is equal, then these two ratios are in proportion. Proportion में कब होती है? जब दोनों ratio equal होती है. Now ratio 1 is 4/8. I can simplify this further, but the basic rule, since they are in proportion, the first ratio and second ratio should be equal to each other. First ratio is 4/8. It should be equal to the second ratio, which is 16/x, right? You must have already done simple equations and you must be knowing how to transpose the numbers or the variable. If not, I have already made a complete video on this topic, simple equation. You can go and check there how to transpose it. So any denominator or anything which is dividing here, it will go up. It goes in a cross fashion. Lower number up, upper number down. ठीक है, मुझे x की वैल्यू चाहिए. Now please look carefully how to transpose these terms. ये नीचे है ना x, take it to another side. अभी यहाँ नीचे डिवाइड कर रहा है, अनदर साइड इट विल मल्टीप्लाई. तो हाउ विल इट लुक? 4 मल्टीप्लाइड बाय x. ठीक है, 8 is down. If I transpose this 8 which is dividing here on another side, it will multiply. So that is 16 multiply by 8. 4 and x are multiplying here. मुझे 4 नहीं चाहिए. I need the value of x. If I remove from here 4 from here, it is multiplying on another side. It will divide, right? Opposite of multiplication is division. 16 and 4 can be cancelled. It is 4 and 8 into 4 is 32. That's your answer. ठीक है, अगर आपको कोई भी चार नंबर दे रखे हैं, हाउ टू चेक दे आर इन प्रोपोर्शन? द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू एंड द रेशियो ऑफ नेक्स्ट टू शुड बी इक्वल टू ईच अदर. अब हम चेक करते हैं, इज इट द करेक्ट आंसर? फर्स्ट रेशियो इज 4/8 जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म इज 1/2. Second ratio is 16/32 which can again be written as 1/2. आप देखो both the sides are coming equal. So 4, 8, 16 and x की value 32. These four numbers are in proportion. I hope you do not have any doubts still here. If still having any doubt, I request you to please comment. I will retake the doubts in the upcoming video. Alright, moving on to the next topic, that is the percentage. अब ये percentage क्या है? दिस इज जस्ट अ रीकैप. अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये जस्ट शोइंग इट फॉर यू. रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज विच इज एक्सप्रेस्ड एज अ क्वोशिएंट. क्वोशिएंट मीन्स डिविजन मैनर एज अ फ्रैक्शन. ओके, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. Proportion is an equation kind of where two ratios are equal. This also we have already discussed. Coming to the percentage. Percent. Cent means होता है 100. ठीक है, percent means per 100. आउट ऑफ 100 हमारे पास जो भी होता है ना वही परसेंटेज होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ है क्लास में, राइट? यू हैव गॉट 88 आउट ऑफ 100 एंड समबडी आस्क यू हाउ इज योर परफॉर्मेंस. आई टोल्ड यू percentage ratio, these are the ways of comparison, right? We can compare the performance. 88 on 100 means it is 88% per 100. okay, जब हम ये denominator remove करते हैं ना, it goes as a symbol of percent. This is the symbol of percentage. ठीक, so this 0 on 100 is 0%, 25 on 100 is 25%, 50 on 100 is 50%, and undoubtedly 100% means 100 on 100. ठीक, so you should be striving towards this number, getting 100 on 100 so that your percentage is 100 on 100. Alright, so now we have just talked about that the fraction where the denominator is 100, उस फ्रैक्शन का जो अपर नंबर है न्यूमरेटर, वही आपका परसेंटेज होता है. बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल दैट डिनोमिनेटर इज 100. तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? इन द केसेस वेयर द डिनोमिनेटर इज नॉट 100, टू काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर. पहली चीज, जिसका डिनोमिनेटर आप 100 बना सकते हो. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इफ आई एम हैविंग 4 आउट ऑफ 5, मुझे जानना है मेरी परसेंटेज कितना. एक टेस्ट हुआ था 5 मार्क्स का, आई गॉट 4 on 5. बट परसेंटेज तो हम डिनोमिनेटर 100 से बनाते हैं. दिस 5 कैन बी कन्वर्टेड टू 100. 100 जो है वो 5 का मल्टीपल है. ठीक है, विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हियर. जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी उसी से ही करना पड़ेगा. सो 5 into 20 डाउन एंड 4 into 20 अप. दोनों ऊपर नीचे 20 किया ना, फ्रैक्शन खाली देखने में अलग लगेगा, वैल्यू विल बी 4/5 ओनली. ऐसा क्यों? देखो मैं 20 अगर कैंसिल कर दूँ, ये 4/5 ही है. सो अभी जो मैं 20 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ इज टू जस्ट कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू दिस डिनोमिनेटर एज 100. नाउ 4 into 20 दैट इज 80 एंड 5 into 20 is 100. एंड 80 on 100 क्या है? हमने अभी देखा, आउट ऑफ 100 जो भी होता है दैट इज योर परसेंटेज, राइट? लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल हियर.
if I'm having 1 out of 2 and I need to know it is what percentage, 2 को हम 100 में फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं. How to do that? 50 up and 50 down. 1 into 50 is 50 and 2 into 50 is 100. बन गया हमारा डिनोमिनेटर 100. आंसर इज 50%. ठीक है. नाउ लेट्स टेक द एग्जाम्पल्स जहाँ पे डिनोमिनेटर 100 नहीं बन सकता. परसेंटेज तो उसका भी आएगा. नाउ if the denominator is not 100, for example I am having 2 out of 3. ठीक है, I got 2 marks out of 3 marks. So for making the denominator 100, मुझे यहाँ नीचे 100 चाहिए. हम क्या करेंगे? 100 अप एंड 100 डाउन. अब ये जो 100 है ना डाउन वाला, मैंने आपको अभी भी बताया था, ये परसेंटेज आप देखो 25% मतलब 25 आउट ऑफ 100. ये जो नीचे वाला 100 है ना, ये परसेंटेज के सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये जो नीचे वाला 100 है ना, आई एम इरेजिंग इट आउट एंड आई एम पुटिंग ए परसेंटेज सिंबल. ठीक है, यहाँ तक इट्स गुड टू गो. लेट मी मेक इट ईजियर, देन विल डू इट डायरेक्टली. आप समझ लो ऐसा हम क्यों करते हैं. नीचे वाला 100 हमने इरेज किया एंड इट हैज़ बिकम परसेंटेज. तो हमें अब क्या करना है? वी जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन एंड दैट विल बी द परसेंटेज. नाउ 2 into 100 is 200. It has to be divided by 3. आप देखो, this is 200 divided by 3. 3 6 are 18. Difference is 2. 0 down. 3 into 6 is 18. Difference is 2. पुट अ डेसिमल, बोरो अ जीरो. आप देखो 20 चलता जा रहा है, तो मैं कितनी भी बार करूँ ये 6 चलता जाएगा. सो आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस यू कैन स्टॉप इट. ये वाला जो नंबर है ना, इफ इट इज मोर देन 5, अगर इसका नेक्स्ट नंबर इज मोर देन 5, यू कैन ऑलवेज राउंड इट ऑफ टू द हायर वैल्यू. तो आप 6 को 7 बना दो. So this is 66.67%. That's your rounded of approximate percent. हम इसका exact नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि चलता जा रहा है. It is not limited, right? It is not completely divisible. So the rule is percentage can be in decimal also. ऐसा कोई rule नहीं है percentage is a whole number or something, but it can be a decimal number also. अब देखो हमने दो चीज़ें यहाँ पे देखा. जिसका डिनोमिनेटर 100 बना सकते हैं तो भी परसेंटेज आ जाता है, डिनोमिनेटर 100 नहीं बना सकते तो भी हमने परसेंटेज निकाला. हमने ऐसे फ्रैक्शन में क्या किया जिसका डिनोमिनेटर 100 नहीं बनता? द गिवन फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100. कोई भी आपके पास फ्रैक्शन हो, मल्टीप्लाई इट बाय 100 एंड पुट अ परसेंटेज साइन, दैट विल बी कन्वर्टेड टू अ परसेंटेज. अब हमने बोला कोई भी फ्रैक्शन हो, तो अगर मुझे ये वाला मेथड नहीं करना ना, मेकिंग द डिनोमिनेटर 100, वी कैन यूज दिस रूल हियर एज वेल. लेट्स हैव अ लुक. फ्रैक्शन इज 4/5. मैंने आपको अभी अभी बोला परसेंटेज बनाने के लिए आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है एक फ्रैक्शन हैज टू बी देयर. वी हैव अ फ्रैक्शन 4/5. मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन बाय 100 एंड पुट अ परसेंटेज साइन. ये परसेंटेज साइन कहाँ से आया? जो नीचे वाला 100 था. ठीक है. नाउ 100 divided by 5, it is 20 and 4 into 20 it is 80%. आ गया आंसर आपका 80%. आप देखो यहाँ भी 80 था, यहाँ भी 80 था. आंसर इज मैचिंग. ठीक. सो एनी फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100 gives you percentage. Let us do some questions based on this one. For example, out of let's say 20 balls in a box. मेरे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर 20 बॉल्स हैं. Out of these 20 balls, let's say 8 are green balls. मेरे पास 8 green balls हैं और 12 red balls हैं. ठीक है. मेरा क्वेश्चन आपसे है, what is the percentage of red balls in the box? अब ये कैसे निकालें? परसेंटेज ऑफ रेड बॉल्स मैंने आपको अभी बताया था. परसेंटेज के लिए द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट इज हैविंग अ फ्रैक्शन. सो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ रेड बॉल्स इन द बॉक्स? रेड बॉल मेरे पास 12 है आउट ऑफ 20. फ्रैक्शन बना. नाउ दिस फ्रैक्शन हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 100 along with the percentage sign. 100 divided by 20, that is equal to 5. And now 12 into 5 is 60. Answer is 60%. एक चीज आप ध्यान रखो. आप देखो मेरे पास जिस बॉक्स में ना दो ही तरीके की बॉल थी जो टोटल बॉल्स है ना. 8 and 12 summing up is 20. So total ball, total of anything is always 100%. ठीक है. किसी भी चीज का टोटल परसेंटेज इज ऑलवेज 100%. तो अगर रेड बॉल 60% है, बाकी ग्रीन कितना होना चाहिए? ग्रीन शुड बी, टोटल परसेंटेज हमेशा 100 होता है. दो ही तरीके की बॉल्स हैं. सो 100 में से अगर मैं ये 60 माइनस कर दूं, दैट इज 40%. तो मेरा जो ग्रीन बॉल का आंसर है ना वो 40% आना चाहिए. लेट अस सी इफ इट इज एक्चुअली कमिंग.
ग्रीन बॉल्स आर 8. सो 8 आउट ऑफ टोटल कितना था 20. फ्रैक्शन बना 8 on 20. फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100 along with the percentage. 100 divided by 20, it is 5, and 8 into 5 is 40. Please have a look. Both the answers are same. If in the exam it is being asked, you can use any of the methods, and in the bracket you need to mention total percentage is always 100%. ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं. अगर मैं आपको बोलती हूँ हम ना एक जगह की पॉपुलेशन की बात करते हैं. पॉपुलेशन में ईदर मेल्स विल बी देयर, ठीक है, ईदर फीमेल्स विल बी देयर, और या तो मेन होंगे या विमेन होंगे, और यू कैन टेक दैट मेल फीमेल और चिल्ड्रन. चिल्ड्रन मीन्स वी आर टेकिंग अंडर 18. अंडर 18 हम सबको चिल्ड्रन ले रहे हैं. ओवर 18 ईदर मेल्स और फीमेल्स. ठीक है, द पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस. गिवन इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन सेज जो नंबर ऑफ मेल्स है ना, लेट्स से males are 35%. I'm just taking any random number. It may or may not be, actual number. That's fine. Males are 35%. If I say females are 40%, so what is the percentage of children? That's my question. इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता. ठीक है, अब मुझे चिल्ड्रन का नंबर तो नहीं पता है. एक चीज़ इज कॉमन सेंस, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है, इन सबको अगर मैं साथ में ले लूँ, ऑल द मेल्स, ऑल द फीमेल्स, ऑल द चिल्ड्रन, ये टोटल पॉपुलेशन है. टोटल कितना होता है? टोटल इज ऑलवेज 100%. ठीक है, सो दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ मेल, परसेंटेज ऑफ फीमेल प्लस परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, टोटल 100 ही आना चाहिए. मेल्स की पॉपुलेशन इज 35, फीमेल्स की पॉपुलेशन इज 40. अब मुझे बच्चों का परसेंटेज नहीं पता. 40 प्लस 35 दैट इज 75 प्लस चिल्ड्रन इज 100. आप 75 में क्या ऐड करोगे फॉर मेकिंग 100? So the percentage of children is 100 minus 75. Answer is 25%. That's your answer. If you add up all the three percentages, you should get 100%. Right? Let us do few more questions based on the picture problem now. अभी तक हमने आपको नंबर दिया था. अगर नंबर नहीं है, I am giving you a picture. वहाँ से हमें percentage पता करना है. How to do that? Let's have a look. This is very interesting topic. Okay. Let me make it neatly so that you are able to make out what I'm talking about. Alright, have a look here. Okay, this one. I made a square, then I divided in 2 equal half. Again I divided it like this. ठीक है, मैंने इसको divide किया. Now let's say this part I have shaded. This part is shaded green. This is also shaded green. This is also shaded green. I need to know what is the percentage of the shaded portion. ठीक है, basic rule for finding the percentage you need to have a fraction. Fraction के लिए it is the part of a whole where the parts should be equally distributed. ठीक है, अब आप देखो ये चारों part एकदम equally distributed है. 1 2 3 4 total 4 parts are there. 4 में से how many are shaded? 3. फ्रैक्शन आ गया हमारे पास. नाउ फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड अ परसेंटेज इज योर फाइनल आंसर. परसेंटेज तो निकालना है. 100 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 25, and 25 into 3 answer is 75%. It's easy. Yeah, let me make another figure. For that you need to put the answer in the comment option. If you are able to answer that correctly, that means you have understood this topic in depth. Okay, it's again an easy question, just a small understanding is required. Okay, I know many of you will be able to answer it correctly. If not, you can again put it in the comment. I will help you out finding this question. I'm sharing few of the parts. You need to tell me in the answer what is the percentage of the shaded portion. Okay, so my question is finding the percentage of shaded portion. Percentage of shaded portion. Okay, so for today this much. In the upcoming video, I will be talking about how to find the percentage of a number. If the whole quantity is given and we need to find the percentage of that region, and if the value of the percentage is given and the whole quantity is missing, how to find that? Profit percentage, loss percentage, discount, VAT,
increase and decrease percentage, simple interest, amount, and all those things which are there in this chapter. This is just the beginning, so I don't want you to be overloaded. Let us take some time to just digest whatever we have done so far. Okay, I hope you have enjoyed the topic. If yes, do not forget to like and subscribe the channel. Okay, and please write the comment what is the answer to this question. Thank you so very much for watching in. Take care. See you in the next video.